So yesterday we just started with what concept beta? Rolling. Rolling motion. Rolling motion matlab beta, I told you this is special form of combined translatory and rotational motion. Combined translatory and rotational motion in which point of contact have same velocity. Point of contact have same velocity, or I can say zero relative velocity. Zero relative velocity. Then beta. See, at the lowest position, if the velocity of translator and rotator both of them same, then it comes out for me 0. And at the topmost position, it comes out to be how much for me? 2b. Done. So what is the rolling motion? A special form of your combined translatory. It is a special form of your combined translatory and rotatory motion in which the point of contact have same velocity, or I can say zero relative velocity. Clear? Any doubt in this one? Check. Example the region. So body is rolling rear better like this. With an angular velocity मान के चलिए omega, and this is a point of contact, isn't it? और ये हो गया इसका radius r, and इसका velocity is right in the front direction v naught. V naught दे रखा है मान के चलो 10 meter per second, and radius is say for example 2 meters. So what will be the omega for pure rolling? Omega is equals to how much? And it is undergoing pure rolling bit. And is undergoing a pure rolling motion at the point of contact, यानी यहाँ पर, isn't it? और ये मान के चलो this one is disk, okay, and this is moving on a floor with a certain velocity, and you know that on this point of contact, velocity of floor will be equal to how much beta? 0. And the velocity of this body is in the front direction with velocity v naught. It is rotating in the outward direction. This will be equal to r omega. मतलब velocity at this point p, velocity at this point p will be equal to v naught minus r omega. Isn't it? And I told you at the point of contact, the velocity will be equal to how much beta? Relative velocity will be equal to your 0. Isn't it? So अगर ये 0 हो गया, then this will be equal to v naught. V naught की वैल्यू कितनी है? 10 minus r की वैल्यू 2 into your omega. And 10 is equals to 2 times of your omega. 2 ones are 2 5s are. And omega is equals to 5 radians per second. What an idea? Dear beta. आया सभी को यहाँ तक? Then beta.
तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या लगाया बेटा मैंने, वेलोसिटी ऑफ द फ्लोर मस्ट बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ योर डिस्क। वेलोसिटी ऑफ फ्लोर कितना होता है बेटा, 0। वेलोसिटी ऑफ डिस्क कितना होता है बेटा व्हेन इट इज रोलिंग, आई टोल्ड यू ऑलवेज v नॉट माइनस r ओमेगा, ये कॉन्सेप्ट लगाया मैंने। डन। चलिए एक और एक एग्जांपल ट्राई करिए आप लोग। या मान के चलो दिस वन इज सम स्फेरिकल बॉडी, कुछ भी ले सकते हैं अपन, डिपेंड करता है। और एक प्लैंक है, ठीक है, एंड दिस प्लैंक इज मूविंग इन द फ्रंट डायरेक्शन विद वेलोसिटी, मान के चलो 2 मीटर पर सेकंड, and this disk is moving in the front direction with a velocity 5 मीटर पर सेकंड। और ये हो गया इसका रेडियस r, मान के चलो r is equals to 2 meters, बहुत बड़ा हो गया ना। एंड दिस वन इज योर प्योर रोलिंग, ये अंडर जा रहा है प्योर रोलिंग के कंडीशन, और रोटेट कर रहा है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है बेटा, दिस इज गिवन डाटा। And you know that at the point of contact, I already told you in the front direction, it will be VCM minus R omega. यहाँ पर फ्लोर की जगह भी क्या हो गया, प्लैंक हो गया, isn't it? VCM की वैल्यू कितनी है 5 माइनस R की वैल्यू कितनी है बेटा 2 into your omega, isn't it? और ये डिस्क है बेटा, isn't it? So I can say that velocity of the disk will be equal to velocity of your plank. Velocity of disk मतलब 5 minus 2 omega is equals to your 2, ठीक है ना। So 5 is equals to 2 omega plus 2, ठीक है ना, आया सभी को। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, ओमेगा is equals to 3/2, and that will be equal to 1.5 radians per second। आई बात समझ में सभी को, रिजल्ट लिया, इधर चले गया ना बेटा, 5 minus 2 is equals to 2 omega, 5 minus 2 मतलब कितना 3, क्लियर है। आई होप यू गॉट एन आइडिया। ये मेरा प्लैंक है और ये डिस्क, दिस डिस्क इज अंडरगोइंग ए प्योर रोलिंग ऑन दिस वन। तो मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट क्या लगाया, वेलोसिटी ऑफ डिस्क इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ द प्लैंक फॉर ए प्योर रोलिंग, बस दोनों की इक्वेट कर लीजिए, क्लियर है। चलो नेक्स्ट वन, मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, motion on inclined plane, motion on inclined plane, ठीक है। मान के चलो मेरे पास इंक्लाइंड प्लेन है इस तरह से, ठीक है, इस पे एक बॉडी इंक्लाइंड हो रही है इस तरह से, यानी दिस प्योर रोलिंग, रोटेट भी कर रही है और सामने भी आ रही है विद ए वेलोसिटी v, एंड फाइनली इट रीचेस द ग्राउंड, ऐसा, ठीक है ना। और ये हो गया इसका हाइट h। एक बात याद रख लीजिए बेटा, व्हेन इट इज रोलिंग अप और डाउन,
while rolling up और डाउन। जो बॉडी हो रही है ना, वो बॉडी कुछ भी हो सकती है, डिस्क हो सकता है, रिंग हो सकता है, सॉलिड स्फीयर हो सकता है, हेलो स्फीयर हो सकता है, कुछ भी है। सो व्हेन इट इज रोलिंग अप और डाउन, फ्रिक्शन इन बोथ केस acts upwards। ठीक है, in both the cases the friction acts in the upward direction। ठीक है ना। so when it is moving in the downward direction, एक तो इसका वेट नीचे ऐड करेगा, that is equals to your mg। अगर मैं इसको रिजॉल्व कर रहा हूं यहाँ पर इस तरह से, दिस मेक एन एंगल थीटा, ये हो गया इसका नॉर्मल इस तरह से n, isn't it? ये भी हो गया इस तरह से, ये हो गया थीटा। so this value will be equal to mg into your cos theta, this will be equal to your mg into your sin theta। ओके, सो ये हो गया फ्रिक्शन F, that is moving in the downward direction, isn't it? क्लियर? अब इसको सिर्फ रिजॉल्व करते चले जाना बेटा, रिजॉल्व करके सिंप्लीफाई करें। तो इसके अंदर हम लोग एक बात कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी इज ऑलवेज इक्वल्स टू हाफ इंटू एम इंटू योर वी स्क्वायर लिखते हैं ना, तो दैट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एम, वी इज इक्वल्स टू योर आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। So it is equal to your half into your m into your, this value will be equal to your r square, m into your r square into omega square। m into r square कैसे लिख सकता हूँ बेटा मैं I, so this will be equal to half into I into your omega square। So kinetic energy of your rotating body will be equal to your half into I into your omega square। So when the body is rolling down from the highest position to the ground, so by applying the law of conservation of mechanical energy, I can say that loss in potential energy must be equal to gain in rotational and kinetic energy, that is half into I into omega square plus half into m into v square। तो ये हो गया, मान के चलो अगर ये डिस्क है which is been rolling, isn't it? So this will be equal to your mg into your h, that is equal to half into moment of inertia will be equal to your mr square divided by 2 into your omega square plus this will be equal to half into m into your v square। ठीक है ना, so that is equal to your half into m into your r square divided by 2 into omega, omega is equals to v by your r plus this will be equal to half into m into your v square। ये स्क्वायर और ये चले जाएगा, and this one will be equal to mg into your h, this m will get cancelled, so this will be equal to g into h, that will be equal to how much बेटा, इसमें से हाफ, ओके मैं m बाद में कैंसिल कर लेता हूँ, ये v स्क्वायर आएगा ना, सॉरी ये देखो, this is mg into your h is equals to your half into m into r square divided by 2, omega is equals to how much only v square divided by r square plus this one is half into m into your v square। क्या इसमें से मैं हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन ले लो, हाफ एम वी स्क्वायर अगर कॉमन ले लो, so this will be equal to your 1 plus this will be equal to your ये r square तो ऐसे कट गया, isn't it? It is 1 plus ये हो जाएगा, क्या हो गया, आई को भी रख लेता ना इसी तरह से, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो बॉडी होगा वो बॉडी के हिसाब से कर लो। सो दिस विल बी इक्वल टू, एक मिनट बेटा, तो दिस विल बी इक्वल टू योर हाफ, इसको मैं क्या कर रहा हूँ देखो, आई में रख रहा हूँ, सो दिस वन इज इक्वल्स टू योर हाफ आई ओमेगा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, यानी फाइनल कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। हाफ एम कॉमन नहीं आएगा यहाँ पर, जब तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ इसको देखो, हाफ तो वैसे कॉमन हो गया, वी स्क्वायर भी आ गया, अगर मैं इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ भाई एम, यहाँ पर देखिए एम और एम से मैं डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ,
So this will be equal to your half m v square common हो जाएगा. This will be equal to your I by your m. I by m into your r square plus 1 हो जाएगा. ठीक है ना. So this will be equal to mg into your h. ठीक है. नहीं ये m अगर यहाँ चले गया तो ये हो गया 2gh is equals to this will be equal to v square into 1 plus I by m into your r square. ऐसे लिख सकता हूँ ना. And a velocity with which it is rolling down will be equal to v is equals to this will be equal to under root of 2g into your h divided by 1 plus I by m into your r square. Okay, but so this will be the velocity. ये फॉर्मूला ही अपने को याद रखना है बेटा. डेरिवेशन तो वैसे भी अपने को यूज नहीं है, बस आपके लिए मैंने करवा दिया. So ये अगर अपने को याद रख रहे हैं basically it's more than enough. So v is equals to your what is the velocity with which that body reaches down the inclined plane अगर पूछा तो v is equals to how much for me better 2gh divided by 1 plus I by mr square. ठीक है ना. Kinetic energy of a rolling body is half of I omega square and velocity with which it is rolling down the inclined plane will be equal to how much better v is equals to under root of 2gh into 1 plus I by mr square. ठीक है ना. अगर h ना देना h की वैल्यू भी लिख सकता हूं मैं इन टर्म्स ऑफ थीटा. h की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ h. देखो अगर यहां से अब तक इसका डिस्टेंस s है, इसको अगर मैं रिजॉल्व कर रहा हूं तो ये cos थीटा हो जाएगा sin थीटा हो जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल टू योर s into your sin थीटा बन जाएगा. isn't it? अगर h ना दे के अगर उसने डिस्टेंस दिया रखा है तो आई कैन इवन राइट वेलोसिटी एज v is equals to under root of your 2 into g into your distance s into your sin theta divided by this will be equal to 1 plus I divided by m into your r square. So this will be the velocity. V is equals to under root of your 2g into your s into your sin theta. Clear? आ गया सभी को. डन बेटा. चलो एक एग्जांपल देख लिया. If a solid sphere rolls यानी ये इंक्लाइन प्लेन है, इस पे अभी जो बॉडी रोल हो रही है दिस वन इज सॉलिड स्फीयर. Isn't it? Now tell me what is the velocity when with the solid sphere rolls, velocity is how much when it reaches the ground. चलो बताइए. मान के चलो दिस हाइट इज गिवन फॉर मी, कुछ भी हो सकता है एनीथिंग बेसिकली. मान के चलो सम 20 सेंटीमीटर्स वगैरह कुछ भी ले रहा हूँ या 20 मीटर्स ले लीजिए, कुछ वैल्यू दे रखा है और ये एंगल दे रखा है इन टर्म्स ऑफ थीटा. सम थीटा में रखा हूँ मैं आंसर फिलहाल तो, सो डोंट टेक टेंशन. So velocity when it reaches the ground मतलब v is equals to under root of 2g into your h divided by 1 plus I by m into r square. Moment of inertia of solid sphere कितना होता है बेटा. Moment of inertia for the solid sphere comes out for me 2 by 5 m into your r square. तो ये हो गया under root of your 2g into your h divided by 1 plus I is equals to 2 by 5 m into r square divided by m into r square. mr square will get cancelled, so it is under root of your 2g into your h divided by 1 plus of your 2 by 5. Clear? And this is equals to under root of your 2 into g value is 10, height is right now 20, divided by this value will become how much for me beta? 1 plus this will become for me 7 by 5. ठीक है ना.
सो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ योर 5 into 2 into 10 is nothing but 20 into 20. So divided by 7. तो ये बन गया मेरे पास अंडर रूट ऑफ योर 2000 डिवाइडेड बाय 7 मीटर पर सेकेंड। आई बात क्लियर? ठीक है, अगर ये बॉडी स्लाइड कर रही होगी बेटा तो बॉडी स्लाइड्स देन उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं रहेगा, जीरो। तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू हाउ मच, अंडर रूट ऑफ 2gh। क्योंकि जब रोल ही नहीं कर रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकालेंगे नहीं, डायरेक्टली हम लोग वेलोसिटी से सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, अब मेरे पास वेलोसिटी आ गया तो कैन आई कैलकुलेट द एक्सेलरेशन विद व्हिच इट इज रोलिंग डाउन द बॉडी। यहां पर देख लीजिए नेक्स्ट वन, acceleration of the body, acceleration of the body. So I can use the relation v square is equals to u square plus 2 into a into s. Initial velocity here is 0, यानी v square will be equal to 2 into a into your s. वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना है बेटा, 2g into your sin theta डिवाइडेड बाय ये हो गया 1 plus I by mr square is equals to 2 into acceleration into your displacement, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, a is equals to a2 और a2 gets cancel, देन बेटा into sb है ना, यहाँ पर sa और s और asb gets cancel, so a is equals to how much only, g sin theta divided by 1 plus I by mr square. So this will be the acceleration, the direct formula. Acceleration for the body rolling down the inclined plane will be equal to how much? A is equals to g sin theta divided by 1 plus I by mr square, ठीक है। अगर बॉडी स्लाइड कर रही है, when body slides, acceleration of the body due to sliding will be equal to only g sin theta. Then beta, acceleration of the body due to sliding will be equal to g into sin theta. Done? तो अपने को वेलोसिटी आ गया डाउन द इंक्लाइन प्लेन फॉर्मूला, isn't it? और उसके बाद अपने को आ गया एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी बाय द टाइम इट रीचेस द ग्राउंड। इसका हम लोग टाइम भी निकाल सकते हैं, टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रोल डाउन द इंक्लाइन प्लेन। नेक्स्ट वन, टाइम taken to reach the ground. Same rolling body के लिए on inclined surface, rolling on inclined surface, rolling on inclined surface, ठीक है ना। I can use the formula S is equals to ut plus half into a into t square. Initial velocity 0 होगा तो u की वैल्यू 0, so this will become for me 2s is equals to a into t square. तो t की वैल्यू हो जाएगी t square is equals to 2s divided by a, यानी time taken to reach the ground will be equal to t is equals to 2s divided by your a. Or else I can write this one as t is equals to 2s divided by acceleration is equals to how much or mu. This will be equal to how much, यहाँ पर देखो acceleration का भी मैंने फॉर्मूला लिखवाया था,
acceleration is equals to your g sin theta. A is equals to nothing but for me g into sin theta divided by 1 plus I by mr square. ठीक है, यानी ये हो गया t is equals to under root of your 2s into 1 plus I by m into your r square divided by g into your sin theta. ठीक है ना? अगर h में लिखना है तो h में भी लिख सकता हूं. h की वैल्यू क्या हो जाती है? h is equals to how much? s into sin theta. ठीक है ना? So I can write here s is equals to h divided by sin theta. S is equals to h divided by sin theta. Isn't it? Or s by sin theta can be written as what? H is equals to s, s is equals to आ गया? Time taken to reach the ground. G sin theta divided by 1 plus I by mr square. Done. Done, beta. So time taken by the body to reach the ground will be equal to this one. अगर फ्रिक्शन निकालना है तो फ्रिक्शन भी निकाल सकते हैं बेटा. म्यू मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू की वैल्यू. So minimum coefficient of friction required will be equal to your tan theta divided by 1 plus I by mr square. तो डिराइव भी कर लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होता है. फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है बेटा? F is equals to mu into your F. So mu is equals to frictional force divided by normal. So N will be equal to how much बेटा? mg into, देखो डायग्राम देख लो एक बार. N किसके बराबर हो रहा है देखिए? N is balancing your mg cos theta. Okay, mg cos theta के बराबर हो रहा है. तो F is equals to this one is mg into your cos theta. ठीक है ना? तो फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा इसमें से. फ्रिक्शन निकालने का तरीका, frictional force into perpendicular distance is equals to I into alpha. We know that A is equals to R into alpha. So alpha is equals to how much for me beta? A by R. So F into R is equals to I into alpha is equals to A by R. And F into R square is equals to I into your A. And a frictional force will be equal to IA divided by R square. And a mu is equals to
I into your A divided by this one will be equal to your mg into your r square into your cos theta, isn't it? So this one is your mu. So mu is equals to your I. Acceleration का फॉर्मूला क्या है बेटा? mg into your sin theta divided by 1 plus I by m into your r square into mg r square into your cos theta. mg अगर कैंसिल हो गया तो म्यू इज इक्वल्स टू यूर ये बन जाएगा i इंटू साइन बाई कॉस इज नथिंग बट tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस i बाई एम आर स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है ना? जो भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है वो ले लेना है, इसमें डाल दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर म्यू। क्लियर बेटा? चलिए इसके और एप्लीकेशन कल की क्लास में कर लेंगे बेटा, आज थोड़ा लेट हो गया। एक बार थोड़ा यहाँ तक रिवाइज कर लीजिए, कल और थोड़ा डिटेल में हम लोग ट्राई टू डू द डेरिवेशन। डन बेटा? चलो बाय बेटा।